ओके एटा ऑन अछि ना ओके गुड इवनिंग समस्ते सर मेंस अपेयर करछ ओडिया लैंग्वेज इज कंफर्टेबल फर्स्ट टाइम मेंस और के जण फर्स्ट टाइम मेंस फर्स्ट टाइम समस्त फर्स्ट टाइम सर सेकंड टाइम सेकंड टाइम सेकंड फोर्थ फोर्थ मेंस थर्ड इंटरव्यू अपेयर केबे करछ केबे नहीं ओके प्रिपेयर्ड अछि ना ओके हां I have appeared here 3 times interview anyways देखो इंटरव्यू रे स्पेशली से कौन पचारिए दैट डिपेंड्स ऑन द बोर्ड जो मेंबर्स रहिले इट्स completely depends on them एबे सही को बोर्ड पड़िबो डिफरेंट एटा गोटे माने अनफॉर्चुनेटली भी एमती अच्छी जे डिफरेंट बोर्ड यूपीएससी रे भी सेमती डिफरेंट बोर्ड गोटे एवरेज मार्किंग अच्छी जमती यही गोटे बोर्ड रो जेति मार्क मिलुची टी अधिया मार्क मिले गोटे बोर्ड को मिले आ गोटे बोर्ड मिल आ गोटे बोर्ड को गले सेठी टी कम मार्क मिले 10-10 मार्क्स एमती भी हे पारे ओके सो देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ लक एज वेल स्टिल एबे जो भी बोर्ड मिलू आमर ऑब्जेक्टिव कौन हाउ विल स्कोर मैक्सिमम इन दैट बोर्ड वी कैन चेंज द बोर्ड मेंबर्स तो से सर्टन बोधे रैंडमली चेंज होउछंती कोन बट आम ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम मार्क्स आनिबा ए मैक्सिमम मार्क्स पई यू हैव टू प्रिपेयर करिया पड़िबो जेमती प्रीलिम्स जेमती मेंस सेमती प्रिपेयर करिया पड़िबो एयर नुहे जे प्रिपेयर न कले भलो स्कोर आसीबनी कि प्रिपेयर कर देले बहुत यू विल गेट वेरी हाई मार्क सेमती भी किसी गारंटी नहीं but there is a high chance of probability that you will get more marks as compared to if you are not preparing. So in which dimension you must focus? First thing is about yourself. It is personality test, right? So they will ask about yourself. Especially first thing is they may ask about your name. It is also they ask the same question in UPSC also, like what is the meaning of your name? It's a common question. What is the meaning of your name? Which presently in OPSC they are not asking name because of certain reasons to reduce. I mean, for more transparency, they are not asking name, but earlier they were asking. Anytime they can change it also, right? So you should know about your name, the meaning of your name. Next is your district. Which district you belongs to? Then you must remember certain history about that district. Some population, I mean the population dynamics, economy, right? What is the major source of income for the people? What are the problems of your particular district? And in answer, you should be more specific. The more specific you are in your answer, it will be better. For example, in mains answer writing also, you know, some points are specific, some points are generic answers. So here also you should be specific. So suppose they are asking the problems of your district. The problems of coastal district is not same as the problems of Sambalpur or Balangir. These are two different, right? The problems of Mayurbhanj is not same as the problems of Cuttack. So every districts have distinct problems. Okay. Okay, let's have a test. For
For example, if I will ask you, what is the problems of Odisha? Just imagine this is your interview and tell me the problems of Odisha. 5 problems. Natural disaster. Next. 5 problems. I have said 5 problems. Left wing extremism. Next. Unemployment. Next. Poverty. Okay. Illiteracy and malnutrition. Now the answer is random, right? You started with natural disaster. Suppose I will ask what is the solution for it, and what you will say? How can we solve the problems of Odisha? What is the first step? Or suppose you are becoming a bureaucrat. So in your block, in which dimension you will focus more and more? Early warning system regarding disaster management, right? Okay, next. Education. Next. So I want to say you that you have to prioritize your answer. Which answer you should say first? Obviously agriculture. Disaster management is a good point. No doubt left-wing extremism is a good point. But major focus should be agriculture, then education or health. Then you come to the security, the infrastructure or security dimension, then disaster. So your answer should be in a what is the most priority areas of the government? Why it is agriculture? Because obviously more than 70% of the people are indirectly associated with agriculture or allied sectors. So that's the most relevant. If you are going for poverty reduction, it is the agriculture. Where if you invest, then poverty reduction will be double as compared to any other sector. So first point you should in mind, your answer should be structured like this: agriculture, then your health, then or education, anything between the two. Then gradually you will come to governance or disaster management or security aspect or industrialization. So mind रे सब जिनस नेक्स्ट थिंग इज तमे सब आंसर गुडा को जदि लिखि भी नबा आहुरी भलो माने गोटे पर्टिकुलर थिंग इफ दे आस्क दिस थिंग्स मोर स्पॉन्टेनियसली दैट आंसर विल कम आउट फ्रॉम मी कोन पई दैट इज सच ए सिचुएशन से जगह को जब तमे एंटर करिवो तुमके जानिबनी केतले गलो केतले आसिलो राइट ऑब्वियसली हार्ट बीट बहुत अधिका थिबो से तुम वेटिंग में गोटे बसै दे गोटे छोट रूम रे बसै दे 5-6 जन तुम बसथिबो तो ना केतले आसियो हरी तुम्हारा कुछ चीज के सेंस रहबनी टिके माने यू विल बी इन अ डिफरेंट जोन बहुत अलग टाइप टी हार्ट बीट रहइबो सो सच सिचुएशन इज लाइक दैट से भूल भी हुए कॉमन मिस्टेक्स भी अच्छी तो से जो जिनिस एमती गोटे टेंस सिचुएशन रे यू डोंट हैव सो मच कॉग्निटिव कैपेसिटी टू एनालाइज एंड से सेठी बेसी थॉट थिंकिंग पावर टा कमी जिव the ability to think that will reduce because you are under pressure and initially jodi kichi difficult word पळै गले आसिले मिली गला then they will ask such type of questions हमें से थिंग नो नर्वसनेस स्टार्ट हो यार बट ऑलवेज से जो जिनस रहइबो जे जहा भी क्वेश्चन आसु फेस रे नर्वसनेस ता म देखा जाऊ स्माइलिंग टिके फेस रहइबो के स्माइलिंग फेस रहइबो सेमती क्वेश्चन पचारंती एमती गोटे क्वेश्चन पचार तुम किछि भी आंसर दे नथियो केबे भी चिंता भी कर नथियो एमती क्वेश्चन पचारियो माने मते गोटे थोर गोटे पचारले सेटा 100 वर्ष तळे गोटे पचारले ए डिस्ट्रिक्ट रो मो डिस्ट्रिक्ट रो ए गां रो कोन पई फेमस एबे तमे सेटा को भी सोर्सेस के पढि नथियो परे बुझली जे मो तले ग्रांडफादर को टाइम रे सेठी गोटे डिजीज होथला तो फॉइजा ट्रीटमेंट करथला गोटे बाबाजी रे सो ही वाज फेमस वेरी फेमस इवन आउट ऑफ द स्टेट ता पाउ लोक आस्थले
such type of information you will never get from any book. Then ask easy question पचारि पारंती गोटे बोर्ड आ गोटे बोर्ड थरे थिले जे बहुत ए थरे जेंति बहुत इजी क्वेश्चन पचारले माने जब लास्ट टाइम जो इंटरव्यू देथिले बहुत इजी क्वेश्चन पचारले माने दे कहले ओके रिलैक्स इनिशियली रिलैक्स हुआ बहुत बढ़िया क्वेश्चन पचारले डिपेंड्स ऑन द बोर्ड पर्सनालिटी बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग मुझे डिफिकल्ट क्वेश्चन आसिला वी हैव टू मेंटेन आवर कामनेस एटलिस्ट फेस से सेटा न देखा जावा दरकार बट फेस से देखा जाऊ न देखा जाऊ जो माने इंटरनली जो टेंशन टा थिबो सेही टेंशन रे तुम बेसी भाभी परिबनी भाभी बार जेहेतु कैपेसिटी कमी जाऊ दैट्स व्हाई यू नीड टू प्रिपेयर इन ए पर्टिकुलर वे यू शुड अपियर मैक्सिमम टू मैक्सिमम मॉक टेस्ट जेते मॉक इंटरव्यू थिबो जो माने देई परिबो सेते भल डेली भी दीटा दियो आई विल सजेस्ट दैट जब आसी जीवो तापर डेली दीटा दबो किसी असुविधा नहीं दीटा दबा डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स तो मिल जाउछन दे विल आस्क डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस your profile is different from his profile your upbringing belongs to a particular district his upbringing belongs to a particular district तमे गोटे पाठ पढ़िछ suppose you are studied in suppose तुम BSc पढ़िछ somebody has studied BTech somebody has studied MBA somebody has only studied somebody is working in a private sector so somebody is working in a government sector your whole profile is different the profession of your parents is different so समस्त different ए ना ताको एक क्वेश्चन पचाले मते सही क्वेश्चन पचारी सही टाइम रे ताको माइंड को जहाज से से पचारी व्हाट एवर कम्स टू देयर माइंड से केमती केता प्रिपेयर हे कि जाई पारुथबे बट सही टाइम जहां माइंड को आसला एंड यू हैव आल्सो पावर टू कंट्रोल इट यू हैव आल्सो सर्टेन पावर टू कंट्रोल द इंटरव्यू हाउ इबे तमे आंसर देला बेले जो जो जिंस पर फोकस करिवो यूजुअली द लास्ट जोटा तुम लास्ट वर्ड ऑफ योर आंसर सपोज हॉबीज पचारि अब हॉबी रे कौन कहबो तमे सपोज तुम हॉबीज पचारले व्हाट इज योर हॉबी कौन कहबो कोटे इंटरेक्शन हेले भल लागो मोर पते भल लाग कुकिंग ओके ओके सपोज चिकन रो केते टाइप कुकिंग सिखछ देखो मु कहबार अर्थ when you say something that this is my hobby that should be your natural hobby you should have deep knowledge about that सेमान को गोटे पर्टिकुलर थिंग रो डिटेल्स पचार देबे बिकॉज़ दे आर फोर पर्सन से रहिले सेठी सेही चारों को डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से बहुत नॉलेज थिबो एट दैट टाइम देयर इज नो सोशल मीडिया एट दैट टाइम देयर इज नो सो मच एंटरटेनमेंट एवेन्यूज दे आर ओनली रीडिंग न्यूज़पेपर they are only pursuing knowledge so generally suppose you are saying a particular hobby you should have deep knowledge about that ebe mu pacharibi next question will be how cooking will help in administration do you think that this hobby is productive that will help in administration Be specific. What type of reforms you will bring in mid-day meal scheme? डाली से मैं जो करूँगी सो डाली का जो सोप करी करूँगी तो बहुत पुराना है कि मतलब it was too much fermented it was nearly to go to waste so stage in sort of we could focus on like kilos of डाली morning रे ना करी मैं obviously morning रे करने तो हब्बा नहीं by the time if we give to afternoon दवा में तो overnight करी जेती की दरकार सेती की करिया पे instead of doing it for 2 to 3 days in one go and then waste about maybe they are not doing like that it's a particular news of a particular school which you are generalizing it मैं तो normally simply counter करिबे बुझिलो ना नहीं they will counter your every answer or they may cross question you if you are very interested in cooking you should join hotel management why you are here माने you should have answer for that you should have answer that will convince them and naturally you are involved in cooking सेम तो समस्त रोसई करछन मुई पानी गरम करछि मु केबे चाय कर दिछि
छोट छोट समस्या कोई କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ I am not judging you, I am just saying in general जोटा भी कहूଛ कि को गार्डनिंग एबे समस्त घर चारटा फूल गछ अछि ताको तमे गार्डनिंग कहदेल that's not gardening. They will ask some technical question about that. What is this term? What is this term about gardening? What is this term about? That represents your personality. Abstract study what you are doing. Like more faster than biology. So sketching is a part of my skill. So Sketching. Sketch ମନେ ଦଉଛ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ hobbies ଟା generally ଏବେ now you become the interviewer, right? And there are two persons. Okay, ତମ hobby କଣ? What is your hobby? What is your hobby? No specific. What is your hobby? Gardening. What is pruning? Pruning মানে কଣ? Leaves. Okay, ସେଇ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ମୁଁ ଜଣା ଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଦେଲି. What is your hobby? Cricket. Yours? Drawing. Your? Blogging. What type of blogging? Book. Book reviews. মানে କୋଉ type of book interested? Politics, philosophy, literature, Indian literature, fiction. Okay. Yours? Traveling. ओडिशार को जागा बुलचा? भुवनेश्वर पुणी करा कैंड traveling. From which state you are? Jharkhand. Okay. But what are the places of India you have visited? They will ask such type of question. Are you going to appear for Odisha Civil Services? Are you going to appear for Odisha Civil Services interview? UPSC. Okay. Then that is fine. Okay. But if you are saying traveling, at least in Odisha, you should have visited certain important places. Okay, what is your hobby? Football. Documentaries. Okay. Are you any competition? Is competition? Why? If you are good at something, why you are not using it? Okay. Suppose now the thing is that it's one interview is one type of comparison between students, right? There is no qualifying. Suppose somebody is saying that I am teaching in rural, I am teaching in slums, free teaching. I am giving free teaching about it. Or somebody said that ଏବେ ଲିଟରେଚର କହିଲେ ମାନେ ମୁଁ ବି କହିଥିଲି ଲିଟରେଚର ମୋତେ ପଚାରିଲେ କୋଉ ଲିଟରେଚର ମୁଁ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ବୁକ୍ ବିଷୟରେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ବିଷୟରେ ସୋ ଆଇ ସେଡ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ ନମ୍ବର୍ସ କହିଲି ଲାଷ୍ଟ କହିଲି ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲାଇଟଲି ହାୟର ମାନେ ସ୍ଲାଇଟଲି ହାଇ ପିଚ୍ ଟିକେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ କହିଦେଲି ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ସେଠୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ରାଇଟ୍ ସୋ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ୱାର୍କିଂ ତମେ ଯୋଉଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଯେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେବି ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯେଉଁ ଆନ୍ସରଟା ଦେଉଥିବ ତମେ ସେଇ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଦେବ ସେ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ପଚାରେ ଯାଜ୍ଞସେନୀରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଓକେ ଆଣ୍ଡ ଦେ ୱିଲ୍ ଅଲସୋ ଆସ୍କ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେଉଁଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ଏବେ ଦେ ମେ ଆସ୍କ ସର୍ଟନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଲସୋ ସେ ପଚାରିଲେ ହୁ ହାଜ୍ ଗଟ୍ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କିଏ ପାଇଛନ୍ତି ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ପଢ଼ିନଥିଲି ସୋ ଇଫ୍ ୟୁ ଫର୍ ସେଇଂ ଲିଟରେଚର୍ ସେ ପଚାରେ କାହା କାହାର ଲିଟରେଚର୍ ପଢ଼ିଛ ତମେ 5-10ଟା ନାଁ କହିପାରୁଥିବ ଦରକାର
को टाइप लिटरेचर तुम भल लगे तुम से गोटे बुक से चेक कर देबे, बुक रे कौन लिखाई पर्टिकुलरली। ओके, जनरली इफ योर हॉबीज सपोज जनकर गोटे हॉबी अच्छी जोटा सब जन सोशल सर्विस करुच्ची, एबे कह जन सोशल सर्विस करुच्ची ता सहित तुम आउ किसी गोटे हॉबी कहूच जोटा बेसी टिके ये नुहे, सो इंटरव्यू को हमको इम्प्रेस करिवार अछि, हमको बोका बनैबार नाही। यू गॉट माय पॉइंट, इम्प्रेस करिवार अछि। अब डॉक्यूमेंटरी जदि कहूच देन मुझे व्हाट इज द माने डॉक्यूमेंटरी प्रॉफिट कोन माने पढिले गोटे कोन व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ सीइंग दिस डॉक्यूमेंटरीज। Different societies. Yes, I got the point. You have so thick strike କରିଛ ସେଇ point. It has a relevance. तुम serials कहबा ଆଉ documentaries कहबा there is a huge difference. ମୁଁ हिंदी serials देखुची कि ओडिया serials देखुची and they are watching the documentaries and movies. They are completely two different aspects. Documentaries गोटे भलो hobbies. They may ask अच्छा ये documentaries देखिଛ सेटा देखिଛ World War II रे देखिଛ कि इराक वार डॉक्यूमेंटरी देखिଛ, and they will cross question you. ओके, मु तुमको बिट बाय बिट तुम डिटेल जाऊनी से जतले तुम प्रैक्टिस करिवो से सेतले जिवे, बट तुम डॉक्यूमेंटरीज कहूछ माने सपोज तुम डॉक्यूमेंटरीज कहिलो तो टॉप जति की थिबो एटलीस्ट 20-30 डॉक्यूमेंटरीज जो देखिन तो देखि नै था, ब्रीफ एटलीस्ट नॉलेज था कि नहले सपोज तुम ट्रैवल कहि दोछ इन केस आ तुम खाली ओनली 2-4 जगह बुलीछ आउ 10टा इंपोर्टेंट जगह टिके यूट्यूब ता वीडियोस गुडा देखिनी वो सर हाँ जाइथिली 10 वर्ष तले जाइथिली बट आउ डिटेल्स तो बन नहीं बट छोटा आइडिया तो किछ तो आइडिया थिबो ना। यू हैव टू बी ऑनेस्ट बट स्लाइटली टिके करप्शन कले चलिबो राइट, बट कंप्लीटली ये करबनी से भी तुमको तुम मिछ भी से टेस्ट कर देबे। मत गोटे ठीक सिचुएशन में पकईले दे आस्क्ड मी अबाउट सॉइल हेल्थ कार्ड, ओके पचारे हु इज इम्प्लीमेंटिंग सॉइल हेल्थ कार्ड डायरेक्टली हु इज इम्प्लीमेंटिंग मैंने पचारे व्हाट इज सॉइल हेल्थ कार्ड मुझे ओबियसली नॉर्मल स्कीम कहीदेली, देन ही आस्क्ड हु इज इम्प्लीमेंटिंग इट इन द ग्राउंड, मुझे सर इट मे बी द ग्राम सेवक्स पर्टिकुलरली डोंट नो जो कि तुम जान नथिबो कहीदेव सर आई डोंट नो सेठी आउ बोका बने फिंगिया ट्राई करबनी। ओके, 4 पीपल वेरी एक्सपीरियंस्ड नॉलेजियस बोका बने पारिबनी तुम, सो ऑनेस्टली सर आई डोंट नो यदि और जब तुम गेस करबा चाहो तो कहो सर सर मे आई गेस जैसे परमिट कह हाँ कह देन कह तो सही सब केसेस से जानी गोटे जिन पचार देले इंस्टिट्यूट करदेले एटा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करुचे जान कि तुम जान ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करुचे बोली 2-3 थर से एम्फासाइज करदेले बोले हाँ सर तुम ये जान ये तुम जान हाँ सर तो पाठ बाहर हाँ सर इमिडिएटली मुझे रियलाइज कली जब हाँ मारदी माने भूल कर दी से मत माने खेलीदे मो सहित बट आलियर से एक्सपीरियंस नथिला एक्जाक्टली सही स्पेसिफिक कथाटा जे माने बार बार एम्फासिस देले भी जानी कि तुम मुहर से मिछड़ बाहर कर देले ट्राइड मो मुहर मिछ गोटे बाहर कर देले से तुम जानी न इवन द एम्फासाइज स्टिल यू शुड ऐसा जाने नहीं यू शुड मेंटेन योर ऑनेस्टी। ओके, then suppose I will ask why you are interested, এটা ଗୋଟେ common question, why are you interested in civil services कौन कहबो why you are interested in civil services ଗୋଟେ sentence भी कहो सर्विस आज मैं कौन सर्विस कर what is your age 28 so 28 जाए आज पर्यंत लोक मान तुम कौन सर्विस कर करछ को एनजीओ करछ ता ना कौन एनजीओ काम करछ ना कहि
बस एग्जैक्टली माने मु तुमको ये करूनी एग्जैक्टली दे विल काउंटर यू और सेठी तुम भाबिलो देन जे भाबिबे जे ओके दिस पर्सन से डाउट पड़े आसला जे ए पर्सन मे बी जान जानी मैन्युफैक्चर कर जे आंसर को सो व्हेन यू आर सेइंग समथिंग जेते पर्टिकुलरली हो yes sir I was working in the संकल्प फाउंडेशन इन बाबुलवालेश्वर आई वर्क देयर 3 months 450 स्टूडेंट्स थिले मैं या पढोथी तीनटा सेंटेंस रे तीन चारटा सेंटेंस रे स्पेसिफिक आंसर जो तुम देलो सर आई हैव डिड दिस भाल्य देन तांगर ट्रस्ट आसिला जे पिलाटा नॉर्मल आंसर सब की कहि परिबनी मु कोन करिछि मु तो बहुत आराम से माने नॉर्मली कहिले सेटा मिछ ना सत अपन हमको इंप्रेस करिवार अछि ना हम ताको बोका बनेवार नहीं रिमेंबर दैट इंप्रेस करिवार अछि सो इंप्रेस करिवार अछि माने स्पेसिफिक आंसर दबा हमें पर्टिकुलर आंसर दबा सर ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन आई वाज डूइंग दिस एबे एमति किछि काम कर दोछि कि चारटा ऑर्गेनाइजेशन को थाना बुझी दबो से कोन करूछंती कि गछ लगोछि कोन करूछि से पता तार हेड की अछंती बिकॉज दे नो से माने बहुत इंटरव्यू सेमति नउछ सो तुम गोटे सोसाइटी पई यू हैव टू वर्क ऑन योर प्रोफाइल डाफ माने ही हला सही तुम प्रोफाइल जहाँ भी अच्छी प्रोफेशनल बैकग्राउंड है कैन पर्सनल पर्सनल तुम कौन कौन तुम पाठ पढ़ी को माने कौन कौन तुम एकेडमिक्स से रिलेटेड और इफ यू आर वर्किंग समवेयर सेठी से पचारिबे सेटा कहीं तुम छाड़िया चाहो व्हाई यू आर लिविंग दैट प्राइवेट सेक्टर एंड यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन नॉन पब्लिक सेक्टर कहीं तुम छाड़िया चाहो तापर सेठी से देखिए व्हाट इज द अचीवमेंट्स ऑफ योर्स व्हाट आर द एक्सपीरियंसेस एबे तमे सेठी नॉर्मल जाई छोडी आउर आछि जे ऑलरेडी काम करी आछि कंसल्टेंट हिसाब रे सो को से का तमे तमे थली का मार दियंत ता मार दियंत आना नहीं गणे गोटे प्राइवेट सेक्टर रे काम करी से जाय पहुंची छि कि छोटे कंसल्टेंट हे कि आछि आ तुम आउर जण किछ करनी तो ये रे सो जनरली जदी सेटा को केसेस रे हुए माने मु तो किसी एक्सप्लेन कर भाई बने खाली डिमोरालाइज कला कथा कहूँ को केसेस रे हुए जदी तुम पाठ माने एकेडमिक्स छाड़ीबार आ इंटरव्यू जिबार बहुत लॉन्ग गैप हो जाउची जनरल से सेटा टिके पचारंती ओके देन सेटा को टिके तुम काउंटर करले दैट तुम 3 and 4 years इट्स अ लॉन्ग टाइम तुम तो आसपेलन से मान सर्विसेज को तो सर यस सर आई वाज डिटरमाइंड टू डू दिस in certain positively कहबो जे व्हाट दिस इज माय स्ट्रेंथ दिस इज नॉट माय वीकनेस जदि मु चार थरे फेल हेकी आ थे आसोची ठीकी दिस इज नॉट माय वीकनेस दिस इज माय स्ट्रेंथ दिस इज माय परसिवरेंस सो तुम तो पॉजिटिवली नेला बट से बेले काउंटर करिवे से नेगेटिवली काउंटर करि पारंती सब बोर्ड काउंटर करंती नहीं किछि बोर्ड काउंटर करंती कम लेवल काउंटर करंती टू डिफरेंट डिग्रीज समटाइम्स दे काउंटर से नॉर्मली पचारंती और एनालिसिस करंती खाली ऑब्जर्व करंती जे व्हाट योर आंसर और व्हाट इज योर प्लान बी सिविल सर्विसेज इज हाईली अनसर्टेनिटी देयर इज ह्यूज अनसर्टेनिटी इन सिविल सर्विसेज व्हाट इज योर प्लान बी न होलेटा कोन करियो तो चिंता करियो तुम निज विषय कोन करियो जोटा तुमको सुइटेबल हम ओके पेरेंट्स कौन कर सेटा पचारती पचार मत पेरेंट्स को प्रोफेशन कौन बट कथा जे यू शुड नॉट से इमोशनल ब्लैकमेल टाइप रो कर इमोशनल ब्लैकमेल जमी तुम कौन कर सर मु खेती करुच्ची आम गोटे पिला कहला सर मु फार्मिंग करुच्ची पाठ पाठ से किसी फार्मिंग कर बट जना पड़े ना फार्मिंग कर माने दोज फार्मिंग मान करुवे लुक्स अलग रही बॉडी पोस्चर अलग रही मोटा है थी मु कहि सर मु बिलर डेली 5 घंटा 10 घंटा काम कर हु विल बिलीव इट जस्ट इमोशनल ब्लैकमेल कर तापरे why you are doing it that means you are doing something that is
not suitable according to your profile. कौन एते पढ़ी सारला पर जाई फार्मिंग करिवो हां ऑर्गेनिक फार्मिंग करूथांत गोटे टिके सोफिस्टिकेटेड वे करथांत सर आई एम प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग एमती करछि जेमती करछि नॉर्मल जाई बिल रे काम करछि जेमती पूर्व काम करथले so are you utilizing your resource I mean your talents in wastage you're wasting your talent yes or no जेमती हमर गोटे पिला पचारले आ गोटे कथा एक्सट्रीम केसेस को केबे जीवनी माने तुम कथा जमी बहुत फेक न लगुव जमी बस स्टाण्ड रही पाठ पढ़ी आईएएस हो गली ओएस हो गली भाई बस स्टाण्ड बारे रहा कौन दरकार घंटे कौटे जाए ट्यूशन कर दियो एटलिस्ट घर खाया पे मिल जाए आराम से सो दैट इज सेटा छाड़ी दियो सेटा न्यूज़ पेपर से काम करिवे बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट यू आर अनेबल टू मैनेज योर ओन फाइनेंस तुम कहूँ जाई बस स्टाण्ड रही पाठ पढ़ली स्ट्रीट लाइट तले सो यू आर अनेबल टू मैनेज योर ओन फाइनेंस so you don't have any innovative idea how to in present time when there is a huge sector of gig economy when there is a huge sector of privatization you are not able to find a part-time job for you so how can you work for poverty alleviation so that negative behavior na media pai se hai behavior hai but sang pai negative behavior so emotional blackmail karibar nahi फेक बेसी कहबार ना जो मु बहुत कष्ट कर संघर्ष कर पळे आसी वी हैव नॉट डन नथिंग एज कंपेयर टू देम जस्ट इमेजिन 30 to 40 years ago they have got into civil services when literacy was less than 30% or 20% so they have done obviously much struggle we can't do that सामे तो सही ब्लैकमेल बेसी करिवे ब्लैकमेलिंग टारगेट न रहो बी ऑनेस्ट कि बापा आउ कोन काम करछन फार्मर खाली कहि देबी जेनुअली फार्मिंग करछन ताले को जेनुअली सर जे फार्मर राइट तो फार्मिंग करन हंदी कि सेटा पर आउ किछि अनस्किल्ड काम करछन देन टेल इट ओके सो ऑनेस्टी that is very important then personal details ta कहली then they will ask about your educational qualification suppose about your background so graduation subject or master degree subject तो तार मास्टर डिग्री सब्जेक्ट अच्छी से सब्जेक्ट रिगार्डिंग पचारे 2015 में मते पचार थिले सेमती मु कहि परलेनी प्रिपरेशन ही नथले जमा पचारले व्हाट इज लार्ज हेड्रन कोलाइडर व्हाट इज हिग्स बोसन कहली बट मु निजे भी कन्विंस हे पनथि सेटा कोन भल से पढ नथली ना तो सपोज तमर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जोटा थिबो सेही टाइम रे हिग्स बोसन लार्ज हेड्रन कोलाइडर एगुडा सब आसिला गॉड पार्टिकल से सब न्यूज थिला कि से जो कॉमन क्वेश्चन टिका सब्जेक्ट वाइज गोटे कॉमन क्वेश्चन पळे आसे फंडामेंटल क्वेश्चन सब सब्जेक्ट गोटे फंडामेंटल क्वेश्चन अछि ना तो सेमती फंडामेंटल क्वेश्चंस किछि प्रिपरेशन हे जीवो केमिस्ट्री गोटे फंडामेंटल व्हाई दिस हैपेंस ग्लास गुडा को कोन व्हाइट देखा जाए दिस कलर हे जाके सम आफ्टर सम टाइम्स तो तुम ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जोटा थिला तार फंडामेंटल क्वेश्चंस गुडा को सही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस गोटे मिल जाए कोठी बुक्स रे 11 12 जो बुक्स देखि देबो गोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थाए सही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सब चैप्टर हाली मास्टर ने बाहरिबो जंती मते एग्जैक्टली पचार थिले मोर सब्जेक्ट ला फिजिक्स सो दे आस्क्ड मी व्हाई सन इज रेड ड्यूरिंग सनसेट मते ना सेटा नहीं मते पचारले व्हाई स्काई इज ब्लू तो मु तार फास्ट आंसर कहि देली से तापर क्रॉस क्वेश्चन गोटे करली सेटा मु कहि पाली व्हाइट्स मु कहली सर दैट इज बिकॉज ऑफ सेरेला स्कैटरिंग गोटे आंसर थिला सेरेला स्कैटरिंग 1 by lambda 4 एम थिला गोटे बट थिंग इज दैट सेट क्रॉस क्वेश्चन गोटे करले व्हाइट्स नॉट वायलेट वायलेट हैज मिनिमम वेवलेंथ एमती सो तम पर्टिकुलर सब्जेक्ट रो टिके डेप्थ जदी हे पारुची ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो सब्जेक्ट रे एबे अच्छो जेते दिन तुम टाइम मिलिबो ए भितरे तार सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जदी किछि अछि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस से तुम पचारिन व्हाट इज दिस फार्मूला हाइजीन्स प्रिंसिपल फार्मूला को एमदी पर्टिकुलरली जीवेन बट जोटा कोटे कॉमन मैन को डाउट रहिबो गोटे जिंस गोटे कॉमन मैन जोटा डाउट दे मे आस्क दोस क्वेश्चंस फ्रॉम योर सब्जेक्ट जो तुम सब्जेक्ट जहाँ भी पढ़ी के आसछ
ओके एम्प्लॉयमेंट डिटेल जॉब प्रोफाइल कौन रेस्पॉन्सिबिलिटीज कौन 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 करूछ सर्विसेस से कौन कौन करूछ एंड व्हाई यू आर लिविंग दैट जॉब कौन से कैरियर नहीं यदि कैरियर अच्छी ताले एठी कहीं आछो व्हाई पब्लिक सेक्टर सेठी कहीं जाउन एनी रिलेवेंट करंट डेवलपमेंट्स एबे जेमती आसीगला कौन बांग्लादेश इशू गोटे पळै आसला से हॉट टॉपिक ओके नेशनल सिक्योरिटी हो गला एनीथिंग स्पेशली जो तुम करंट डेवलपमेंट्स चाहिए कौड़ा प्रिपरेशन करी एत गोटे न्यूज अच्छी गोटे भल सोर्सेस अच्छी यू मे गो थ्रू द ऑल इंडिया रेडियो स्पॉटलाइट न्यूज एनालिसिस यूट्यूब रे पड़ेगा स्पॉटलाइट न्यूज एनालिसिस सेठी सब डेली वन टॉपिक इज बीइंग डिस्कस्ड बाय ऑल इंडिया रेडियो डेली सब दिन रात 9 गोटे डिस्कशन हुए ऑल इंडिया रेडियो रे स्पॉटलाइट न्यूज एनालिसिस गवर्नमेंट वेबसाइट तो से माने कौन डेली से जो गोटे ये चूज करूँ डेली गोटे न्यूज से चूज कले गोटे टॉपिक सो ऑब्वियसली तो समझ जदि लास्ट माने 6 months or 8 months देखिबो हार्डली यू विल गेट 50 टॉपिक्स लाइक दैट सम टॉपिक्स आर गेटिंग रिपीटेड और पॉलिटिकल थिंग्स सम रिलेशनशिप नहीं सो 50 टॉपिक्स सेठ तुम सिलेक्ट कर परिबो ओके कि जो न्यू बिल आसुची से दिन न्यूज पेपर कौन पढ़ी तो दिन पूर्व जो न्यूज पेपर हैव यू रेड इट न्यूज पेपर टुडे कौन न्यूज पेपर पढ़ुच कौन न्यूज पेपर पढ़ुच हिंदू सब हिंदी पढ़ुच सो डू थिंक हिंदू इज अनबायस्ड न्यूज पेपर हिंदू इज कंप्लीटली बायस्ड न्यूज पेपर यस और नो it has completely left alignment कह दो सर इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़े हिंदू है गोटे हिंदू भल हिंदू जे गुड सोर्स समस्त हिंदू कह प्लस तो इंडियन एक्सप्रेस भी कहीद खाली तुम हिंदू पढ़ो ना तुम लगे माने गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग गवर्नमेंट विल नॉट डू एनीथिंग गवर्नमेंट ये सब आयर लिखती जो टॉपिक गुड़ा अल्टीमेटली तुम किसी करें वी आर वेरी हेल्पलेस ये टाइप जहाँ गले प्रोब्लेम हम हिंदी टी आर्टिकल गुड़ा से टाइप नुहे क्रिटिकल ठीक अच्छे जे समटाइम्स जमती से लिखे जे व्हाट एवर गवर्नमेंट इज डूइंग दैट इज रॉन्ग स्पेशली आईआर केसेस रे से लेफ्ट अलाइन न्यूज पेपर नुहे कि समटाइम्स तो योजना भी पढ़े तक बैलेंस करने सो विल गेट ए क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ दैट योजना भी पढ़े कि नले ऑल इंडिया रेडियो न्यूज सुने so you will get the proper information खाली हिंदू टे मो ओपिनियन रे टे सारा हिंदू पढ़े न्यूज इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़े बैलेंस हो ना इंडियन एक्सप्रेस न कौच हिंदू सहित योजना भी पढ़े न्यूज करंट अफेयर्स योजना यू फॉर रीडिंग योजना मीन्स यू आर गेटिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट हिंदू केवल लिखी हो कुछ कले बोली बट योजना लिखो व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट दैट एक्जैक्टली व्हाट इज द रीजन इफ समथिंग हैज नॉट डन व्हाई इट हैज नॉट डन ओके हमें बहुत डिटेल नेक्स्ट हॉबीज एंड इंटरेस्ट कहीदेली एरियाज ऑफ इंटरेस्ट को एरिया तुम काम करा चाहूँ जेनराली जब लिटरेचर कौटी बेसी इंप्रेसिव है ऑब्वियसली लिटरेचर बा जोटा तुम कहूछ बेसी टिके से इंप्रेसिव होता दरकार दैट हैज सर्टेन रिलेवेंस टू एडमिनिस्ट्रेशन लिंक टू एडमिनिस्ट्रेशन और से डायमेंशन किसी ना किसी तुम किसी अचिवमेंट थी ताले बेटर जदि अचिवमेंट ना टिके तो भाव कौटा तुम सुइटेबल हम आ से रिगार्डिंग ना डाइवर्स इंटरेस्ट अच्छी यू वुड मोर गोटे पर्टिकुलर इंटरेस्ट आई हैव डाइवर्स इंटरेस्ट मूवी भी देखे मु क्रिकेट भी देखे मु ये भी देखे देन जब डाइवर्स इंटरेस्ट पड़े आसला एंड दे आस्क ये पर्टिकुलर डीप क्वेश्चन देन तुम गोटे गोल्डन वर्ड है लिमिटेड वर्ड मन रखी आई हैव ए लिमिटेड नॉलेज सब डिटेल पचार क्रिकेटर पचार देले डीप एनालिसिस गोटे पचार देले आ तुम से तुम कहीदे सर मोर क्रिकेट है हॉबी सर आई हैव ए लिमिटेड नॉलेज विथ रेस्पेक्ट टू क्रिकेट एंड आई एम सॉरी सर कि से वाला जिन तो कौन है फास्ट कथा लिमिटेड वर्डा केबे ना यूज कर दियो इंटरव्यू भितर सो दैट इगो सैटिस्फाई भी हो जीवो ना नहीं डोंट सो दैट यू आर द नॉलेज तुम सब जानिछ एमती गोटे
कोठी ना कोठी तो से तुमको माने बीट को चाहिए ना, तो तुम थोड़ा सुनेबो एटलीस्ट सारे हैव लिमिटेड नॉलेज। हाँ आज न्यूज़ गुड़ा टी न्यूज़ पेपर देखो आर्टिकल टी देखे ऑप्शनल सब्जेक्ट टी थोरली पचारिबे। लास्ट टाइम दे आस्क्ड मी सोशियोलॉजी पर पचारले, पॉल साइंस पर पचारले, सेडी फीमेल जदी फीमेल मेंबर अछंते देयर हाई चांसेस दैट दे विल आस्क अबाउट फेमिनिज्म। फेमिनिज्म यस। हाँ ना एटा पचारियो गोटे ऑप्शन में अछि ना, से पचारियो व्हाट इज योर ऑप्शनल जोटा कब से गोटे। हाँ जे पचारि पारंती, दे मे आस्क यू एनीथिंग, पचार देबे, दे मे आस्क यू एनीथिंग जोटा तुमके सुनथियो सेटा पचारि परिबे, तांको इच्छा भाई जहाँ मूड को आसिले सेटा ओके। तो जेते सेहित पई इंटर पे तुम जे सब माने एटलीस्ट ब्रीफ नॉलेज थिबा दरकार, बेसी पढ़िबार नहीं। ऑप्शनल रीडिंग पढुचो तुम सब क्वेश्चन आंसर मैक्सिमम 5 सेंटेंस और 4 सेंटेंस जेते ब्रीफली देबो सेते भलो। और से पतले व्हाट इज मार्क्सिज्म पता दे तुम मार्क्सिज्म गुडा कहि चललो नो वेरी क्रिस्पी रे केते तुम आंसर दो, क्रिस्प आंसर दोचो और प्रॉपर आंसर दोचो कम सेंटेंस भीतर। ओके ड्रेस टिके नॉर्मली रहिबो, ड्रेस केमती रहिबो नॉर्मली फॉर्मल ड्रेस पिंधि सेठी आउ माने कोन ये बांधी की मुदी बुंदी पिंधि की से कंकण पिंधि की सेटा जीवन किछि फॉर्मल शर्ट पिंधो जो मन को इच्छा हला ब्लेजर भी पिंधि पार। हम जान जे ब्लेजर न पिंधले भलो मार्क मिलिबोनी कि ब्लेजर पिंधले बहुत भलो मार्क मिल जिवो, सेमती किछि नुहे। इंटरव्यू रो किछि पर्टिकुलर गाइडलाइन नहीं जेटा ही हेले ही तुम भलो मार्क मिल जिवो, न सब से कर दियंते। समटाइम्स तुम भाबुथो जे पिलर भलो हिनी से बहुत मार्क आनिथि भारी, भाव तुम बहुत भलो हिची मार्क मिलिबोनी, सेमती किछि ये नहीं से कोन पर्टिकुलर देखंती इट डिपेंड्स ऑन देम। समटाइम द सेम बोर्ड इज डिफरेंट फॉर टू डिफरेंट पर्सन्स। मो से जन प्रैक्टिस करथला से मोटू बहुत कम मार्क रखथला माने प्रैक्टिस रे, और सेठी जेतेबेले गलु से झियो पिलाटे थिला माने गुड लुकिंग थिला, तो बढ़िया क्वेश्चन पचारले सब माने पचारले व्हाट इज द ओपिनियन, व्हाट इज योर ओपिनियन, ओनली ओपिनियन पचारले ता एई छरे ओपिनियन कोन, तापरे मते क्वेश्चन पचार एमती क्वेश्चन पचारले जे केबे लाइफ में सुन नथिली, ताको 70 80 मार्क मोड अधिक देले एवं तो डिफिकल्ट क्वेश्चन ही पचारले आ समझ डिफिकल्ट क्वेश्चन पचारले तीन जन लोक एबे तुम कोन करिवो भाई तांको तुम सकल पसंद आसिलानी सेठी तुम कोन करिवो किछि ऑप्शन नहीं ना। सो सेम बोर्ड आल्सो मे बिहेव डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल। आ सेठी नो आरोगेंसी, हाँ देखिए माने तुम कम्युनिकेशन स्किल केमती अछि, सेठी प्रेजेंस ऑफ माइंड केमती अछि, तुम केमती आंसर करि पारुछो, सेठी केते चिंता करि पारुछो, बिकॉज़ से किछि भी आंसर पचार दे पारे ना सेठी से जगह। किंतु एया नुहे जे तुम आंसर न देले तुम बहुत खराब हे जिवो, फैक्चुअल आंसर पचारले जने दे आर मैच्योर। फैक्चुअल तो इन्फॉर्मेशन कहा पाके नहीं ना, एग्जैक्टली किए कोन मन रखि से कोन सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मन रखिछंती इंटरव्यू को से भी नॉर्मल तंगर रही अछि, बट दैट इज नॉट पैरामीटर। बट जदी हमें मैक्सिमम प्रिपेयर करबा सेठी कामनेस मेंटेन करिवार अछि, इवन इफ यू हैव नॉट आंसर्ड एनीथिंग still you should be look like smiling sir। आउ इंटरव्यू बेले जे पचारुचंती तांको आंसर दे चलला परे मन समस्या टे देखि दो राइट। इनती इनिशियली जब मैं एंटर करिवो फास्ट जमती मैडम को नमस्कार करियो, फास्ट जे मैडम थिबे नमस्कार करियो, देन मेन मेंबर्स और जदी एंट्री करिवो तो फास्ट मैं कम इन सर कहियो हम सब मझे मैडम बसते देखो भूल कमती हुए मोर कोन भूल हेतला। एबे नॉर्मल जो प्रैक्टिस बोर्ड सो जनरल मेल मेंबर था सेठी गला सेठी मैडम बसले बसले मैं कम इन सर मैडम तो यू शुड बी रेडी, से मिस्टेक वर चांसेस अछि यदि मझे मैडम बसचंती माने शी इज द हेड ऑफ द बोर्ड मैं कम इन मैम कह कि जे बसन तो नमस्कार टा आगो मैम को तापरे सर को आसला बेले चेयर टा अपन साइड करिवो माने बसिछ
बसला जो थैंक यू कहब आसला जहाँ नमस्कार थैंक यू कहले पुणी चेयरटा को टिके आगू कर बट कथा है से बेले मन पड़ो मन पड़ोनी सब जिन मन पड़ोनी मन पड़लानी कारण से टाइम टेन्स जिनस ना बट से प्राक्ट ऑटोमेटिकली ही जाऊ से जिन गुड़ाक तो से जिते मक थब से तुम आइडिया पड़े ओके स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर ये आई कांटेक्ट जोटा कहते तुम कथा चिंता कला सर हाँ हाँ सर गोटे क्वेश्चन पचार तुम एमती मुंड बुलेल इे से हो जाए ना आई कांटेक्ट इट इज नॉट इजी आई कांटेक्ट इश्यू रहे स्पेशली गोटे क्वेश्चन पचार देवे व्हिच इन केस ऑफ जोटा तुम नॉलेज नहीं इन दैट केस योर आई मूवमेंट विल बी देयर हाथ मूवमेंट एमती बुलला कथा कहला तो हाथ को आंठू लगेदेल एमती भाई भिक्स बस पड़े एमती ठीक अच्छे अवसर पूरा एमती बस माने रिलैक्स हो बस पूरा जमती माने कौन पूरा ड्रिल चलला भाया no it's just a normal human being just calmly composedly कथबार्ता कर okay communicate clearly be concise answer should be based on logic and rationality that is very important rationality means scientific right scientific or rational suppose your answer should not be based on deep emotions or जमती घड़ी का कविता माने पूरा अलग लेवल रो imagination सेमती नहीं you are not a poet you are going to be administrator and be like administrator you are not philosopher there even though your optional is philosophy you are not a philosopher you should talk like administrator think something like I mean perspective rationality होगा दरकार rather than the solution एबे पोएट गोटे प्रॉब्लम केमती एक्सप्रेस करियो इमोशन हिसाब से एक्सप्रेस करियो ये सब गोटे पोएट और राइटर बट आज एडमिनिस्ट्रेटर तुम कौन सॉल्यूशन बेस्ड ब्लाइंड बिलीफ जमती न रहो सपोज से मुदी पिंधि पड़े से पचार मुदी कहीं पिंच हाँ सर भाव मुदी पिंधले चाकरी पाइबी और समथिंग लाइक that means you are believing something in supernatural thing which doesn't exist maybe you are not rational so a question mark pade asle about your personality and emotional intelligence integrity avoiding extreme statements ei joda kotha extreme statements means religious extreme statements dekho at least from your I mean from your statements it should not be revealed that you belongs to a particular caste or you belongs to a particular religion or a particular region or even gender also any type of biasness is harmful any type of biasness सेठू कथा कथा पर्टिकुलर गवर्नमेंट अगेंस्ट कहला सही पार्टी जो एमती होला पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स इट इज वेरी डेंजरियस एक्सट्रीम स्टेटमेंट एक्सट्रीम स्टेप जमती मोर सांग गोटे पचारे कहले इफ सम पीपल आर प्रोटेस्टिंग एंड दे आर नॉट लिस्निंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन then what you will do he said sir I will start लाठी चार्ज कर दे बहुत कम मार्क मिलला ऑब्वियसली कम मार्क मिलला एमती 10 मार्क्स ही पाई 5 मार्क्स ही पाउछन सपोज तुम आर्गुमेंट करियो तांको सहित जाइकी बहुत एमती बिहेवियर करियो हाँ तुम सब जानिछ केयर करबनी गोटे एमती जाउथो चली जाउथो हाँ कौन हो गला यस आई एम नॉट हम देखि जेमती पिला मो बोर्ड रे गोटे पिला थिला मोदी पिंदी की पूरा कंकण मिदी जाई सेठी दादा ना कौन व्हाट यू विल प्रेजेंट देयर that 15 minutes say 15 minutes will decide your life with whom you are in front of whom you are showing this such type of attitudes and what is our level they have already somebody is OPSC member means he or she has already got huge success in his life
and it is state PSC. You are not going to, in no circumstances, maybe you will never get those positions. So all of them are highly qualified, highly experienced, even though you both have same talent. They are much highly experienced than you, much more knowledgeable than you. In the attitude camp or argument karibo so jinsa, what I am saying is right. Even some has got like the 10 marks or 15 marks out of 200, 250, sorry 250. So never so, be humble, completely humble, no exaggeration, no biased statements, no extreme statements. पूरा समस्त हटे दियो, पूरा एमती कर दियो, पूरा सेमती कर दियो, माने radical statements, you should not give radical statements. Extreme statement, okay, you should abolish income tax. एमती गोटे स्टेटमेंट सपोज तुम देदेल कौन पाई ना सुब्रमण्यम स्वामी कहते भाई सुब्रमण्यम स्वामी कहला ठीक अच्छे इज एन एमपी और ए प्रोफेसर, but when the policies are formed, when the government is imposing a particular system of taxation, there is a huge research, there is a huge experiment, there is so many bureaucrats, so many financial advisors, so many economists, they all are deciding, they are coming to a common consensus. But tome Subramaniam Swami kothare padi tome koibo ki abolish income tax? No. Caste, regarding caste or regarding religion or regarding suppose nowadays so jemti kono amaro गांधी को अगेंस्ट बहुत चली सोशल मीडिया राइट और सही बेसिस तुम गोटे कहीदेल विदाउट गोइंग इनटू डीप गोटे स्टेटमेंट कहीदेल ए सर गांधी आई डोंट लाइक गांधी, हु द हेल यू आर टू लाइक गांधी और नॉट, यू हैव नो एक्सपर्टाइज. आम कौन पढ़ी कहला तुम 3-4 वर्ष 5 वर्ष तुम सीरियसली प्रिपरेशन करी कौन नॉलेज अच्छी, इवन दो आर प्रिपेयर्ड फॉर 8 years केते नॉलेज, इट्स वेरी लिमिटेड. हाँ, as compared to previous तुम्हारे बहुत नॉलेज है, कॉमन मैन as compared to common man you have knowledge, right? But in front of them you have no knowledge. It's almost negligible in front of them. So radical statements केवे किसी करवार नहीं, किसी शो ऑफ करवार नहीं, जे नॉलेजियस भी बहुत नॉलेजियस शो ऑफ करवार नहीं, कि कथा कथा रे से जो कॉमनली परसिव्ड नॉलेज ऑफ फ्रॉम सोशल मीडिया से कथा रे कहवार नहीं. कारण मते लगे जे गांधी एमती तुम कौन गांधी पढ़ी, देन दे विल आस्क हैव यू रेड दिस बुक अबाउट गांधी, हैव यू रेड दिस बुक अबाउट द गांधी, नो, किछि न जानि तुम स्टेटमेंट दोछ मीन्स यू आर जस्ट ए कॉमन मैन हु इज टॉकिंग टू मच विद यूजलेस. हां ना, गिविंग एन ओपिनियन इज नॉट इंपोर्टेंट, एवरीबॉडी कैन गिव यू ओपिनियन. तुम गोटे गाँव को पढ़ाओ जो ठीक बहुत लोग अच्छा कुछ जना भी ना, यू आस्क एनी ओपिनियन से कहे सब ये गवर्नमेंट ये कले भल होता है, एमती कले भल होता, इनकम टैक्स एति भल होता, यू विल से इट. बट ओपिनियन देवा पूर्व तुम केते रिसर्च कर, तुम केते रिसर्च करके से कथा कहछ, दैट इज व्हाट इंपोर्टेंट. सो बेसिक एक्जाजरेशन केबे भी करिवो नाही, एक्सट्रीम स्टेटमेंट केबे भी नाही. ओके, रीजनलिज्म कि सपोज जमती somebody belongs to western Odisha, एमती कथा कथा रे से पचार देबे, ओके यू आर फ्रॉम वेस्टर्न ओडिशा, ओके व्हाट इज योर थिंग आई थॉट अबाउट द डिवीजन ऑफ ओडिशा, कि एमती कौशल गोटे डिस्प्यूटेड कथा पचार देबे जार आंसर टा टिके डिफिकल्ट हो तो मैनेज करिया पे, थोड़ा बैलेंस्ड वे रे तुम जीवो. एटलिस्ट तो डिवीजन कथा केबे भी कहबो नहीं. सपोज तुम कहला नो सर देयर आर सर्टेन इश्यूज, सपोज तुम डिस्प्यूट वाला क्वेश्चन पचारिले जोठी आंसर केवल हाँ कि नहीं तुम गोटे दे पारिबो नहीं. Yes sir, there are certain issues, there are some developmental issues, but I don't think that dividing Odisha will be a solution for it. Suppose तुम कहलो, then the counter question is why you think that this is not a solution? This may be a solution because administration will be proper. It will have a limited area to properly concentrate in the development. तब तुम सर एविडेंस देवार अछि सर, those states who are got divided, for example Chhattisgarh, Jharkhand or some small states in northeastern states,
they are not highly developed just because the area of jurisdiction is very small. So it is a rational answer hela. But ये आंसर दवा पूर्व तमे नेक्स्ट जो पूर्व जो आंसरटा कहिथिलो ये मु खाली सपोर्टर नुहे मे बी यू आर जस्ट सेइंग टू इम्प्रेस देम बट जोड़ा तमे कहूच ता पछरे तम स्टडीटा कोन सो स्पेशली तमे जो रीजन को बिलोंग करूछ इफ यू बिलोंग्स टू वेस्टर्न ओडिशा ताले एई क्वेश्चन आसीबार गोटे चांसेस बहुत अधिक बिकॉज से तुमको जानियो चाहिए तुम आइडियोलॉजी कोन अदि भूल तमे कहि देल हां सर हवा दरकार बिकॉज देयर इज huge unemployment and poverty and something under development then तापर तब देखिबो नेक्स्ट इंटरव्यू कथा because that is a radical step there is huge repercussions of it dangerous repercussions law and order situation very resource management issues ଆସି죠 okay हाँ बैकअप प्लान्स रिगार्डिंग पचारि परिबे सने व्हाट इज योर अल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस एटा न होले कोन करिवो हाव यू एवर थॉट अबाउट इट एटा न होले कोन करिवो एटा को कोन करिवो निज अनुसार कहिवो हां सर मु एया पढिछि तो मु कंसल्टेंट हे जिवि कि गोटे एमबीए करि कंसल्टेंट हे जिवि और आई एम इंटरेस्टेड टू वर्क इन एनजीओस बिकॉज़ प्रिपरेशन करूछि जो मल्टीनेशनल एमबीओ एनजीओस तांगडे काम करि परिबि एमति किछि गोटे जिंस एंड एनी स्किल जोटा तुम एक्स्ट्रा अच्छी तुम पाखे जो जो भी स्किल एक्स्ट्रा अच्छी ए स्किल कथा कहूँ इफ रियली दैट इज ए स्किल यू मस्ट राइट इन योर डाफ ओके सेट तुम लिखियो फॉर्म फिलिंग रिगार्डिंग गोटे प्रोब्लेम भी हुए से गोटे जिन ओडिया लिखा पड़े से लिख गोटे कटाकटी भी हो जाए तुम यह लिख बहुत पिला कौन करती से जावा पूर्व तक फिलअप करती हाँ फिलअप तो कर कौन अच्छे गोटे गार होगा पुणी कह व्हाइटनर मार बिकज दैट सेम थिंग हैपेंड विथ मी आल्सो मुझे केयरलेस से करी मे भी शेयर कर मुझे व्हाइटनर मान नी तीन जगह मे भी सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट आउट प्रमोशन हिसाब ना मोर से भूल कर पूर्व सब रेडी कर दो यस कौ सार छाड़ दे दीजिए से ही पचारे व्हाट जो प्रिफरेंस अच्छी कौन प्रिफरेंस अच्छी व्हाट इज द फर्स्ट प्रिफरेंस एटा देउछन ना पचार फॉर्म रे तो जोटे तुम फॉर्म पड़ी से से लिखियो आर्टिफिशियल आगो छ आर्टिफिशियल तापर कोऑपरेटिव पढ़ियो इन द लास्ट काहे के एटा कोऑपरेटिव लिखियो तमे व्हाई नॉट एनी अदर ग्रुप वन जॉब जदि आउ किसी ग्रुप वन जॉब नाही तो बोधे एथरा खाली ओएस अछि ना कोन अछि तापर ग्रुप वन जॉब आउ किसी अछि के वर्ष खाली ओएस अछि ना ताल चलिबो ताल तुम कोऑपरेटिव टिके कहबो सर हमर से दैट मिस्टेक इज ए गुड थिंग काहे कि मिस्टेक कहबो तुम अरे दैट इज ए पॉजिटिव थिंग सर आई एम इंटरेस्टेड टू वर्क विद द वुमेन रूरल वुमेन इन कोऑपरेटिव्स जोटे तुम एडवांटेज मिलियार अछि आई एम इंटरेस्टेड टू वर्क विद रूरल वुमेन इन कोऑपरेटिव्स डेवलपिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिकॉज दैट इज द बेसिस ऑफ रूरल डेवलपमेंट it is a common question. What is your ambition for rural development? What you will do in case of rural development? Out a common question. Corruption. Do you think that you can reduce corruption? तुम्हें corrupted होगा नहीं तुम ना तो कदा भी नहीं so system is corrupted. Everybody is most of them are corrupted. How can you think that you will become a change? केम तुम भावुच तुम कर सब ऊपर करप्टेड तले करप्टेड सब करप्टेड तमे कोन करियो सेठी इज इट पॉसिबल कौन आंसर दबा सेठी एटा भलो आंसर अछि तार सर इवन दो many of the people are corrupt it's not that all of them are corrupted there are many honest and highly efficient officers as well किसी भी न होछंती बहुत जन अच्छा हाईली एफिशिएंट एंड ऑनेस्ट ऑल्सो
ସତ ବି ଅଛନ୍ତି ମାନେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ବଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତ। So it's not completely impossible to become impossible to remain honest. It is possible because certain people has done it. Then there is a common question. Suppose your senior is corrupt, what you will do? Situation based question. They may ask you situation based question. Moral dilemma questions. Situation based. But ସେଇ କେସେସ୍ ଯଦି ତମେ ଦେଖ ଯାହା ବି ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସୁ ମାଇଣ୍ଡ କହୁଥିବା ଟିକେ ଅନେଷ୍ଟ କଥା କହିଦେବି ସାର୍ ଯାଅ ଦେଖିବା ଆଉ ସପୋଜ ଜଣେ ତମ ଝିଅକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଗଣ ଧରିକି ଦେଖେଇଦେଲା ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ପଚାରିଦେବେ ସେ କହୁଛି ତମ ଝିଅକୁ ଧମକ ଦେଲା ଆସିକି ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କହିଲା ବିଲ୍ଟା ପାସ୍ କରିଦିଅ ତମେ ସେଠି କ'ଣ କରିବ? ତମ ମନ ଭିତରୁ କେତେ ବି ସତ ବାହାରୁ ସେଠି ସତ କହିବାର ନାହିଁ। Sir, there is a police system. I will inform the district administration, police administration. Junior के भूल करुची तो मु as per the law constitution supreme court guidelines सेटा तो हलिबार नाही जहा कहूची सेया सुप्रीम कोर्ट जहा कही देला सेया फाइनल डिस्प्यूटेड केस जो केस डिस्प्यूटेड अछि ओके जो केस सब सुप्रीम कोर्ट गोटे केस अछि जोटा भर्डिक्ट आसीनी सपोज मैरिटल रेप भर्डिक्ट आसी गले आसीनी बोधे मैरिटल रेप रो भर्डिक्ट आसी आसीन तो बस दैट इज सब जुडिस एंड इट्स अ डिबेटेबल कांसेप्ट एंड तब तुम व्यूटा कहबो जे फीमेल मेंबर कहि पचारि छंती देन आंसर शुड बी टिके फेमिनिस्ट इंक्लाइन कथार्ता करिवो ओके आ देखियो टे बैलेंस कहि साला पर किंतु बैलेंस कथा कहबो वन साइड केबे भी नाही वन साइड कथा केबे भी नाही हाउएवर we should think about the others dimension that it is not highly misused because we have seen high cases of misuse around 80% माने statistics मधे भी rampant misuse of dowry that is dowry prohibition act or rape cases रे भी बहुत माने women harassment रे बहुत false cases होची तो however that is another aspect छोटी balance कर लो तमे सब बेले मिडिल पाथ ट्राई करियो आनिया भाई ओके गोटे पर्टिकुलर एटा सपोर्ट करछ ना एटा सपोर्ट करछ डू सपोर्ट सीए और नॉट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जोटा आस्थिला डू सपोर्ट और नॉट तो सेठी भी तमे टिके जदी बैलेंस करे में ट्राई करिवो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस दैट क्वेश्चन सब क्वेश्चन बैलेंस करि परिबनी बट यू विल ट्राई तो हां सर सपोज सीए पचार सीए रे कौन सीए रे मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड फ्रॉम अदर कंट्रीज तो सीधा क्वेश्चन सो डायरेक्ट क्वेश्चन सही है डोंट यू थिंक दिस इज वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 14 और 15 हां ताल सुप्रीम कोर्ट तो सका कर देवा कथा Oh, no, please. एटा तुम इमोशनल कथा कहि देला सुप्रीम कोर्ट कहि हलो इट इज वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट नो तो सुप्रीम कोर्ट कहिन तल काहे तुम कहू नो आई एम जस्ट हियर टू मॉडिफाई योर ओपिनियन आमे देश पढ़ी ना देयर इज ह्यूज डिबेट एंड डिस्कोर्स इन सुप्रीम कोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू दैट सुप्रीम कोर्ट क्लियरली कहला सेटा कि वायोलेटिव नुहे बिकॉज आमे खाली आर्टिकल 14 और 15 खाली दुईटा लाइन पढ़ी देछंती मिडल किछि पढ़ी नाहंती द अदर इंटरप्रिटेशन ऑफ इट एंड जदि सेटा वायोलेटिव हेई थांदा अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट अल्ट्रा वायरस को डिक्लेयर नॉट अवॉइड करथांते इट वुड हैव बीन डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरस और नॉट बट सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करेनी सो डू यू थिंक दैट यू आर बेटर देन सुप्रीम कोर्ट So now it's a debatable issue पळे आसला सेठी तुम स्वतः प्रभुत्व तुम ओन ओपिनियन पळे आसला रादर देन व्हाट इज जस्टिफाइड यस और नो सो कथा हला जेहेतु हमर नॉलेज हला लिमिटेड वी हैव नॉट डन ह्यूज रिसर्च और स्पेशली इन दोज केसेस सुप्रीम कोर्ट रो वर्डिक्ट पळे आसी सेठी निजो ओपिनियन को रखि दियो पछाड
गो अकॉर्डिंग, कारण आम भितर एबे भी बहुत बायसनेस और फॉल्स कॉन्शियसनेस अच्छी, जते प्रिपरेशन कर चलो से सब फॉल्स थॉट चल 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 जीवो, इट इज आवर इग्नोरेंस, ओके, इट इज कंप्लीटली माने एटा बहुत इग्नोरेंस, सो आम ओपिनियन टा बहुत जगह रे ठीक नुहे, तो से कहले आम ओपिनियन टा इंपोर्टेंट नुहे, आम से ओपिनियन पछे केते फैक्ट दे कथार्थ कहउछन दैट इज इंपोर्टेंट, और जनरली तुम देख तुम को भी गोटे स्कीम नहीं जाओ, सपोज तुम हिंदू 15टा फैक्ट दे दियो, हिंदू सब क्रिटिसिज्म देछि, तुम से क्यों खाली क्रिटिसाइज कर दबो, यू विल नॉट गेट मार्क्स, because there are many things that is not mentioned in that article also, जोटा तुम योजना पढ़ले पाई था, just because that is written in Hindu and Hindu criticize कर देछि, that means this whole scheme is bad, you should not say like that. So again you have to go for balanced approach, okay. गवर्नमेंट जदि गोटे करिछि मीन्स गवर्नमेंट रो गोटे स्कीम चलीछि माने सेटा गोटे पॉजिटिव थिंग, हाउएवर सर्टन जो लाकुना रहिला टिके क्रिटिसिज्म कर दबो, हेलो हाँ मु नोट फोन कर रात नोट फोन करबी हैला, बुझला, बैकअप प्लान रेडी देखियो, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, हाँ आज मतलब कौन करिछ पार्टी हो डन, खाली सर्विस कर देबी, सेठी तो बाटे बाहरी जो सर्विस कर देबी बोली एडमिशन पछ लोक सेवा कर देबी, कि आज पर्यंत केबे किछ करनी, हेले करबी चाकरी पाइले करबी, सो दिस सर्टेनली बी मैन्युफैक्चर्ड आंसर है जो नॉर्मली भी तुम कहि पारो इट्स ए सिक्योर जॉब, so it's a public sector job, there is job security, at the same time we'll get multiple opportunities for public service and police service opportunity that I am also interested in that. There will be a variety of jobs in different dimensions. If suppose somebody is going to be in administrative job, administrative cadre, you may work in various departments. Yes, sir. तो cadre related भी तुमको आइडिया थिया what is cooperative service, थर्ड देइछो कोऑपरेटिव सर्विस रो काम कोन जानना, ठीक रिफिल टिके पढी दबो, तो कोऑपरेटिव सर्विस कोन करा जाउछि 10टा सेंड इन्फॉर्मेशन था कोऑपरेटिव सर्विस रिगार्डिंग, आ गोटे जिनस तुम पेपर कने देइछो तमे कोन गोटे जिनस तुम लिखि दिछो सेकंड प्रेफरेंस आ तुम ता विषय किछ नॉलेज ही नहीं, तुम तो फॉर्म फिल अप कर जनो तुम कोन गवर्नमेंट कोन काम करियो, एटा बाय मिस्टेक काम, आई एम नॉट जजिंग यू फॉर दैट, ना किछ से काउंटर करबा पई कहि दे, माने डिमिन करबा पई कहि दे पारन सेटा, सो नेक्स्ट को हमें जीवा एडी जानि हला बैकग्राउंड स्किल्स जहाँ भी तुम स्किल्स अच्छी यू हैव टू शो राइट, एटा मोर स्किल्स अच्छी, एक्स्ट्रा स्किल्स जहाँ भी अच्छी, गोटे एक्स्ट्रा लैंग्वेज जानिछ कि कोनटे पढ़ी देइछ, देखो एक्स्ट्रा लैंग्वेज जानि कोन अच्छी, तुम के दिन टिके लागि गेल जदी भितरे गोटे लैंग्वेज 10-15 मिनिट पढ़ी देलो गोटे लैंग्वेज ब्रीफ तुम जानि दबो, क्वेश्चन आंसर भी सिखुची, बेंगली टीटी जानिछ तार खाली अल्फाबेट देखि देलो गोटे सिखुछ, आई नो दिस बेंगली, आई कैन रीड बेंगली, किसी नहीं बेसी घंटा लगे 40 घंटा खंड पढ़ले भी हो 10-20 घंटा खाली हो, so you have extra skills, so they will be impressed, okay somebody तार किछ इंटरेस्ट अछि गोटे काम करिया भाई, जो जिनसटा तमे माने 50% कर जे 100% कहि दे पारो, 0 ରୁ 100 कहले धरा पड़ी जिवो, ओके मोर सैंपल क्वेश्चंस, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हमको करिया तुम इंटरेस्ट अछि एबे कोन कोन काम करिया में चाहू छ, सपोज इफ यू बिकम एडमिनिस्ट्रेटर then in which areas you will focus, तुम को करिया फोकस करियो, कहबो तुम जहा इंटरेस्ट अछि को एरिया तुम फोकस करिवो, जेमति कहली एग्रीकल्चर से वाला टिके स्ट्रक्चर्ड आंसर रहबा दरकार, रैंडम एटु गोटे पॉइंट आलिवरी सेटु गोटे पॉइंट आलिवरी से गोटे पॉइंट आलिवरी सेमति नै, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया पचारले तमे टिके कि ओडिसा सेमति पूरा सपोज गोटे स्ट्रक्चर वे कहि आनिबो, सोशल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, problems in agriculture, problems in economy, problems in infrastructure, ठीक है स्ट्रक्चर्ड आंसर हवा दरकार, स्पोर्ट्स अचीवमेंट जदि किछि अछि राइट, एबे ओलंपिक चली छी बस व्हाई इंडिया मेडल माने
why India is getting less medals or scope and performance in Olympic is not so sound. Not common question है जाइए କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କଲେ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ ତୁମେ ଏଇଟା କଲେ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ ତୁମ ଭାବୁଛ ଏଇଟା ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଏ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ ସଜେସନ୍ ଦେଇଦେବ ସେ ପଚାରିବ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ ସେଠି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବଟ୍ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ गवर्नमेंट हैज लिमिटेड रिसोर्सेस पूरा कंप्लीट ब्लेम करिवनी सरकार किसी काम करनी यू आर गोइंग टू पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट दे आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट या कोई सरकार किसी काम करनी सर वी आर डेवलपिंग कंट्री देयर इज लिमिटेड रिसोर्सेस सो गवर्नमेंट हैज इज वर्किंग बेस्ड ऑन प्रायोरिटीज हाउएवर आई थिंक दैट इन दिस डायमेंशन वी शुड फोकस लिटिल बिट मोर पुणी या पूरा भी नुहे गवर्नमेंट ठीक काम करुच्ची आउ टिके लगे भल हुआ गवर्नमेंट has done many things आउ टिके लगे भल हुआ so existing जो system अच्छी you are not completely satisfied with it because if you are completely satisfied with the system then how will bring reforms right so तुम किसी गोटे कि एमती गोटे तुमको पचारे ओके टेल मी सर्टन recommendations of yours जोटा गवर्नमेंट तुम आनिया पई चाहू जो that is not present at present time जोटा प्रेजेंट टाइम नहीं आउ तुम आनिया पई चाहू बढ़िया क्वेश्चन ना नहीं समझ किसी माइंड अच्छे कह प्रिपेयर होती गोटे दुटा ओके चिंता करके जो डायमेंशन भी है कि आउ को स्टेट रे सेडा अछि फॉर एग्जांपल एटा कोन आंसर कोइ परनो ठीक चिंता कर केमती ओके लेट मी टेल यू खेलो ओडिशा में कर पारे गोटे खेलो ओडिशा खेलो इंडिया भलिया कर पारे नहीं कर पारे और वी कैन हैव थिंक टैंक हियर लाइक नीति आयोग जो ओडिशा विषय चिंता करियो और पॉलिसी मेकिंग प्रॉपर्ली करियो now it is presently dominated by bureaucracy और आम जमी या शिखा क्या we can focus on agriculture जोटा subsistent agriculture अच्छी we can focus agriculture and animal husbandry like in the type of Punjab and Haryana or we can will make reforms governance reforms to increase ease of doing business like Telangana or Andhra Pradesh who are scoring rank 1 so rank 1 score करछन ना सेटा करि परिबो ना तो पर्टिकुलर थिंग आम या आम एटा आनिबा बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ अदर स्टेट्स जोटी जे भलो करिछि lateral entry okay yes that is a good thing but ये देखि कि सेटा सेवन बेसी चॉइस कर दे दिया lateral entry फिर भी कहिबो बट सेटा गोटे माने राइट पॉइंट बट एमती ना लैटरल एंट्री आसला बहुत बड़ जिनस हो बिकॉज ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर इज वर्किंग टॉप लेवल ही बहुत कंसल्टेंट्स सब काम कर सब डिपार्टमेंट दैट विल नॉट बी a game changer but if you shift your governance model and making like that to Andhra Pradesh regarding especially ease of doing business giving clearance to the industrialized industries सेटा गेम चेंजर हो पार yes or no और आम एनिमल हस्बेंडरी करदा पंजाब टाइप रो बहुत रिडक्शन सब बड़ फायदा है एनिमल हस्बेंडरी एंड एग्रीकल्चर तो तमें तुम निज ओन आंसर रेडी कर रिलेटेड फ्यूचर पर्सपेक्टिव फ्यूचर माने तुम खाली नॉर्मल आसी ना तुम ओडिशा फ्यूचर भावुच तुम तार पास्ट जानिछ तार प्रेजेंट जानिछ प्रेजेंट को बुझुछ कौन कला गोटे बेटर हम ओके नेक्स्ट और जदि से कहिबे कौन गवर्नमेंट जानिनी तुम एटा जो कहि दोछ सर आई हैव लिमिटेड नॉलेज आई थिंक दिस विल बी बेटर ऑन माय एक्जिस्टिंग नॉलेज मैं भाबुछ एटा भलो ही पारियो बोली आ जदि मु सिस्टम को जीवा ओटे भलो से स्टडी करबी ओटे भलो से जानिबी प्रेजेंटली मैं एटा भाबुछि किन गोटे जिंस कहबो या कहबो जे गवर्नमेंट के जानिनी बोली माने आउ सब बोका बसन छडा आईएएस ऑफिसर माने एंड यू विल ओनली नो ऑल द पॉलिसीज ओके से इट
बट यदि काउंटर आसला देन सेठी पूरा हम्बल है कि पूरा निजको तळे रखि जेमती हाँ टेल मी योरसेल्फ योर स्ट्रेंथ यस योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दैट्स ए पार्ट व्हाट इज योर स्ट्रेंथ व्हाट इज योर वीकनेस भी कहि परछ दरकार इफ आर नॉट एबल टू से योर वीकनेस मोर किछ वीकनेस नाही one of my friend was preparing for interview से अराउंड 12 टाइम इंटरव्यू रे करथिला गोटे से ये हाँ ना ना जाइन लेट हो रही हाँ हाँ ओके से माने बार कहला मत कभी राग लगे तुम कौन भगवान ना कौन सर राग लगे फ्रस्ट्रेशन भी लगे पर फिर नेक्स्ट डे ठीक ही जाए तो जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वी आर नॉट सुपर ह्यूमन ओके सो स्ट्रेंथ रिगार्डिंग तुम आइडिया रही दरकार वीकनेस रिगार्डिंग आइडिया रही दरकार आउ एमती तुम जमी इवी गोटे ट्रेनिंग माने हो गला एवं ट्रेंड चली जो सब टॉपिक गुड़ा इवी गोटे दे दिया फॉर एग्जांपल कि एनवायरमेंट कथबार्ता करूच फॉरेस्ट मोर गार्डनिंग इच्छा अच्छी फॉरेस्ट रिलेटेड पचार देले जमती व्हाट आर द करंट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया राइट हाउ ई कॉमर्स इज रिवोल्यूशनाइज द मार्केट प्लेस कार कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड अच्छी व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग द करंट अफेयर्स अच्छी नहीं गोटे डिफरेंट डायमेंशन केमती क्वेश्चन पचारती तुम कहल मोर बुलिया बहुत इंटरेस्ट अच्छी सपोज somebody has said safe traveling okay now question for you what is the process for a site to be recognized as UNESCO world heritage site one prepare करिवा मैं तुमको डायरेक्टली कोन सब पढ़ी के आई नो nobody knows everything so तुम प्रिपेयर करिवो now just you by this class you will just understand that in which dimension I will prepare in current time what is the most important thing of communication that was recently जेमती तुम मूवी कौन देखिछ से मूवी रे कौन थिला ओके को जगह तुम वर्क प्लेस काम करछ जनरली इंटरेक्शन एनवायरनमेंट केमती सेठी हाउ सेठी हरासमेंट रो को ओके सपोज यार गोटे काम करछ सपोज सो वर्क प्लेस हरासमेंट रिगार्डिंग क्वेश्चन आइबार गोटे कॉमन थिंग ओके सो व्हाट आर द रीजंस फॉर इट व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर वर्क प्लेस हरासमेंट तो से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पचारि पारे एटा केमती हुए व्हाई सम आर टारगेटेड अदर्स आर नॉट टारगेटेड रिगार्डिंग harassment how to tackle it से केस से कौन करिवो व्हाट शुड यू डू जहा करिवो फॉर एग्जांपल अंडर कार्पेटिंग केबे करिवोनी माने गोटे रंग को केबे छुपै देबा पई भाबिबोनी ओके सपोज नॉट क्लोज लोक जे बहुत भलो काम करछि बट सपोज वन डे ही सी harass समथिंग और ही harass somebody देन आ तुम जानिछ सेटा तुम चाहे तो बंद कर दे पारिबो और से लोकड़ा बहुत भलो बहुत ये माने तुम से बाहर कर तुम खाली कोन ट्राई करथियो जे तुम या कहू जे हां सर छाड़ देबी ताको सेटा मन कहू तुम ठीक अछि नो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम सेटा सब ध्यान कर दो जोटी डाउट आसिला से रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन कोन कहू छी से रिगार्डिंग लॉ कोन कहू छी जहा लॉ कहू छी सेया रेस्ट जहा हो लॉ कहू माने अंडर कार्पेटिंग करो नाही डजंट मैटर हुएवर ही और सी इज मु ताको पनिशमेंट देबी से कह तुम भाई सेठी तुम भल काम करू से भूल काम करदेला से केमिति करेनी बट एमती भूल काम कर देछि तुम जन से केबे करबनी एमती डिफरेंट सिचुएशन दे देबे बट सेठी तुम कोन कहितला सेठी आ ऑनेस्ट कि सत बाजी न बाहर सेठो पाखे पैटू से केस सत न बाहर जेमती राइट सेठी तुम कहबो जे ए केसेस रे यही करबा ओके वर्क प्लेस रिगार्डिंग हम केमती निजे मोटिवेट करो स्ट्रेंथ वीकनेस भी कहबो प्रिपरेशन टाइम फ्रस्ट्रेटिंग होतुबो केतरा अटेम्प्ट हे गलानी पुणी केमती मोटिवेट करूछ टेंशन लागुच ना नहीं सो आ तुम जदि माने इमोशनल करिया कहिलो सर हाँ सर बहुत टेंशन लागुच एटा बहुत ये माने खाली चाकरी दे दियो मागे की माने से कटरी वाला सिस्टम नहीं ओके हाँ सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट आई हैव गिवन माय बेस्ट
If it is happening, that is, I will be very happy, my parents will be very happy. If it will not happen, then I will pursue different career. ସେ କଟା କୋଉଠି ଶିଖିଲ ସାର୍ ଗୀତାରୁ ଶିଖିଲି ରିନୁନ୍ସିଏସନ୍ ଓକେ ଗୀତା ଫିତା ଯଦି କହିଦେଲ ଟିକେ ଭଲସେ କି ପଢ଼ିଛ ଦେନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ବିକଜ ଗୀତା ଇଜ୍ ଏ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି ମାନେ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫି ହେଲା ଗୀତାରେ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ ଗୀତାରେ ଅଛି ତ ଟିକେ ଯଦି ସେମିତି କୋଟ୍ କରିପାରିଲ ଟିକେ ଭଲ କଥା ପୁଣି ବଟ୍ ଟିକେ ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର ଗୀତା ପୁଣି ମାନେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଖାଲି ଗୀତାରୁ ଜାଣିଦେଲେ ତାପରେ ଗୀତାରେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିବ embracing areas of interest commitment learning pursuit of greatness culture को respect करियो जेमती strong work ethic empathetic why should be empathetic why should you have emotional intelligence because most of the people are poor in India right and administration हिसाब रे understanding the situation of others that is emotional intelligence yes or no तो से सब qualities तुम थिबा दरकार और सेमती पचारियो why what are the qualities you have that you think that you are suitable for this job sir I have honesty I have emotional intelligence I can think about the perspective of others empathetic achi I am very persistent I am more persistent achi work काम करिया पई positive कहिबो हला weakness ही फाइंड आउट करिवो कोन weakness एमती weakness कहबो जोडा माने सर घर काम बेसी करि पारेनी एमती गोटे कहीदेव राइट इट्स अ डिफरेंट थिंग कि झाल गोटे वीकनेस कह सर फूड को बहुत भल लगे फूड बेसी खाई दिए सेटा इज वीकनेस माना ना सांगसाथी बेसी वीकनेस मोर सोशल एबे सेटा पॉजिटिव वन ऑफ द थिंग इज दैट सोशल कंटेंट ऑफ बेसी पॉजिटिव तो ता जो बेसी पढ़ी पारेनी बेसी दोस्ती टिके हो जाउची बेले बेले समटाइम्स पुनी कहनी मोर सब दोस्ती खाली दिया काम धान कर खाली बोलिबो तापर समटाइम्स आई माने मोर सोशल इंटरेक्शन अधिक आई जाए इधर पढ़ी पारेनी समटाइम्स कहि दो ओके पुणी बेसी कहला मु बहुत सांग मान सहित मिसुची को चाकरी कर किछ करबनी खाली एंटरटेन करियो पैसा पेला पर बैलेंस सेटमेंट्स कमिटमेंट टू लर्निंग एबे भी तुम लर्न करूछ कोन सारे पढ़ीबी जीवन सारे पढ़ीबी एटा मैं पीएचडी करबी एटा जो कहली बैकग्राउंड रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी केमती ये करिवो एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव्स एनजीओ गोटे हेगला कंसल्टेंसी हेगला टू एडमिनिस्ट्रेशन सेटा भी परिबो टीचिंग जन को जो बैकग्राउंड भी अछि तुम से रिगार्डिंग देखि दे पर अदर जॉब्स भी अछि हम सारे अलग जॉब्स अपेयर करबी आ addressing social challenges tackling corruption regarding क्वेश्चन हम कहि दैछि रूरल डेवलपमेंट कहि दैछि नक्सलिज्म प्रॉब्लम पर व्हाई देयर इज नक्सलिज्म इन ओडिशा व्हाट तुम कोन स्टेप नक्सलिज्म कम हाउ टू काउंटर इट तो तीन चार पॉइंट तुमके थिबा दरकार स्कीम्स रिलेटेड आइडिया थिबा दरकार कोन स्कीम्स गवर्नमेंट रो अछि से रिगार्डिंग ओडिशा को एरिया नक्सल एरियाज अछि इंडिया को एरिया नक्सल एरियाज अछि देन व्हाट एमती सब नॉर्मल क्वेश्चन आस पारे जो माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज पॉवर्टी इन योर लैंग्वेज व्हाट इज डेवलपमेंट इन योर लैंग्वेज तो तमे भी टिके छै डायमेंशन निजर गोटे माने अलग डेफिनेशन के भलो कोड बनै थिबो ताली टिके भलो हो किंतु सेठी कथाला इशू डायमेंशन पूर्व लिखि रखि दिबा दरकार सेठी जने मैन्युफैक्चर कलो व्हाट इज डेवलपमेंट सेठी चिंता करी कहिलो देन दैट विल नॉट बी प्रॉपर बुझिलो ना नहीं डेवलपमेंट एजुकेशन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर इस जिनस अस्त्रो जन डेवलपमेंट इन केस ऑफ ओडिशा एंड डेवलपमेंट इन केस ऑफ दिल्ली these two definitions are different yes or no when you talk in Delhi development will be in healthcare and infrastructure there is no scope for agriculture there that is not huge but in case of Odisha primary focus will be agriculture in case of development okay so defining development same जो overall जो हमरो पैरामीटर्स रही तार गोटे भलो डेफिनेशन तुम पाखे थिबा दरकार कॉन्स्टिट्यूशन टी आइडिया थिबा दरकार कॉन्स्टिट्यूशन किछि आर्टिकल्स थिबा दरकार जोड़ा से जिन डिफाइन करूची हाँ तो बेसिकली तुम ये सब देखते आ इंटीग्रिटी कौन तुम केते इंटीग्रिटी अच्छी तुम केते काम करि परछो केते टेंशन झेली परछो तुम निजर सेल्फ एनालिसिस असेसमेंट केते करि परछो वीकनेस ता तुम सर मु बहुत समय पढ़ी पारेनी और सब काम करि पारे बट
8 घंटा अधिक पढ़ी पारे कौन कर सर मूवीज टी देखिए ना स्टोरी बुक टी पढ़ी दिए अलग इंटरेस्ट अच्छी कि गछ लगे सैकेलिंग टे एमती जहाँ भी तो सर वीकनेस कहीदेव कौन से मुझे बेसी समय पढ़ी पारे 8 घंटा अधिक पढ़ी पारे दैट इज वीकनेस ताने कौन तुम से कहा था तुम बहुत घोषी घोषी चाकरी पाइन नॉर्मली कि घर काम करे घर भी हेल्प करे घर काम भी करे नेगेटिवटा कह जमी पॉजिटिव है भाया भी मैंने डिफरेंट डायमेंशन डिप्लोमेटिक आंसर ओके कार किसी डाउट्स अच्छे कह एनी डाउट्स हाँ हाँ 100 कॉमन क्वेश्चन कहीं सर ऑनेस्टली सर से पढ़ी देती फास्ट ऑफ ऑल सपोज साइंस मु पढ़ी देती बट व्हेन आई रेड सर ऑनेस्ट आंसर एमती कम करे जब मुझे पढ़ी जनरल स्टडीज मोर से डायमेंशन इंटरेस्ट पड़े आसला फास्ट ऑफ ऑल सेकंड थिंग दैट विल हेल्प इन जीएस बिकज मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ुची मुझे जीएस हेल्प करुँच बट फिजिक्स पढ़ले जीएस किसी हेल्प होनी आना थिंग दैट इज स्कोरिंग स्कोर भी भल मिलूँ ऑनेस्ट कथा किसी असुविधा नहीं मुझे चाकरी मिलो मुझे चाकरी चाकरी करुँच ऑप्शनल ऑनेस्ट कथा बट मल्टीपल आंसर देदेव गोटे आंसर दे खाली दब सर भल मार्क मुझे नेली अरे यार चालू लोक मल्टीपल आंसर ओके आउ कार किसी क्वेश्चंस दैट्स ए क्वेश्चन एटा कहली से तो सब्जेक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन लिंक करिवे सब तो जहाँ कह एडमिनिस्ट्रेशन तो केमती लिंक हो चार्ट जीपीटी यूज कर ओके यूज कर अरे यूज कर फ्री रे किसी असुविधा नहीं फ्री रे पचारि पार लिंकेज बिटवीन मैथमेटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन से एक्सप्लेन कर दो जहाँ वीडियो वीडियो देखी दो 4-5 सेंटेंस पढ़े आस मैथमेटिक्स मोर आइडिया नहीं ना कि आंसर दे पारे से जो क्वेश्चन पढ़ते भी से आइडिया नथिबो मे भी आइडिया नथिबो नोबडी नोज एवरीथिंग बट कथा ले तो योर आंसर शुड बी कन्विंसिंग ओके आउ कार किसी क्वेश्चन अछि हम्बल ही रिप्लाई कर स्माइल रिप्लाई करियो जहाँ आसी कह जहाँ कह सर आसनी सर लिमिटेड प्रिपरेशन आई हैव लिमिटेड नॉलेज जाननी बेसी सॉरी कह सर फिंगीबनी किंतु न जानिकी गप मारदेबनी link for like how अरे दैट द बेस्ट थिंग sir textile sector is the second most I mean most labor intensive sector leather design okay that is also labor intensive sector so if so say jinse skin by animals to mara hoji and all that stuff so yes that is a part where we should administration should focus but it's not that I mean से माने ओल्ड ही साला पर ताम करा जाउची सम आफ्टर डेथ भी करा जाउची तो गवर्नमेंट और किसी से परमिशन भी दे किसी सर किसी जगह एम तो खाइला सब चिकन डेली मारुछंती डेली हजार लक्ष लक्ष चिकन गाड़ी खाई दउछन ना नहीं हां केते केते चिकन माने सब छणा होथुए रास्ता रे सो गवर्नमेंट परमिशन देछि माने इट्स फाइन एटा सर्टन रेगुलेशन टे देखि देबो जस्टिफाई करि पड़तो जिनसटा तो हे गला टेक्सटाइल सेक्टर तो कहबो सर लेबर इंटेंसिव सेक्टर दैट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट सेटा हम प्रमोट करियार अछि सो इट कैन बी अप्लाइड इन लेबर यस स्किलिंग से स्किल करले हे गला से रूरल एम्प्लॉयमेंट तो बढ़िया ही परियो टेक्सटाइल सेक्टर और लेदर रे ही परियो बहुत अधिक ही परियो आ कोन कार किस डाउट्स हमर तो हरि पर भी पर इंटरेक्शंस रहिबो तुम जाके पढ़ा पढ़ी कर पुणी आहुरी डाउट तुम आस ओके हाँ कह कौन Korean dramas, Korean series जो देखी
हाँ दैट शिखी कौन शिखुछ इज इट ओनली ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ओके जरा किसी रेलेवेंस एट इज सुनो सुनो somebody saying documentaries and somebody saying serials you tell me ତମେ ସେଠି ଥାନ୍ତ ସେଠି ବଡ଼ ଇଏରେ ତ କାହା କ'ଣ କହିଥାନ୍ତ usually serials are exaggerating certain emotions ହଁ ନା ନାହିଁ but in case of documentaries yes they are just showing a historical event real event historical event that has really happened but it just say only romanticism or some family fights or something like that almost every serials have same story so it's just a piece of entertainment everybody entertains but mate ko jo kotha कहली we have to impress them we have to impress them जदि आम पाखे किसी हॉबीज हो पार जोटा इम्प्रेस कर ठीक अच्छे ना जब सीरियल देखु तो सीरियल सहित भी गोटे जोड़ी देव जब गोटे सीरियस इच्छा अच्छी ये भर डॉक्यूमेंटरी 500 देखी दियो टॉप 15 डॉक्यूमेंटरीज कम कम देखी दियो स्टोरी टी जाणी दियो बेसी न पड़े 15 मिनट देखली गोटे विफाइट पड़े आसो हाँ से एमती होता डिटेल मन पड़े सार देखी सर 5 वर्ष तक देखिए मन नहीं सॉरी 5 years back I have seen it so एमती गोटे तो तापे टिके टाइम देवा पड़ो हॉबीज माने somebody has spent some thousands hundreds of hours like that गोटे ऑनेस्ट हॉबी बट आम से छोट बड़े जान ना प्रिपेरेसन कर पचारे कौन हॉबी तुम जहाँ इच्छा से क्रिकेट इच्छा क्रिकेट देखा सीरियल इच्छा सीरियल देखिए सब कर तो देखिए जदि हो पारा कौन कर किसी क्वेश्चन प्रिपेयर कर आंसर बनइबार टे डिफिकल्ट हम तुम डायमेंशन तुम डायमेंशन कौन क्वेश्चन हो पार देखिए आम किसी सैंपल क्वेश्चन देवी जहाँ पचार इंटरव्यू ऑलरेडी ताकू निज निजर आंसर बनइब यस मुवीटा बहुत भल जिनस बट यस इट्स ए आर्ट हाँ तुम सेमती कहि पार तुम ताकू आर्ट हिसाब से कहि पारुथो बुझिल ना नहीं movie is a best thing to understand different societies हाँ जेनरेटा टिके तुम ये हवा दरकार तुम सेटा बुझुछ तुम जस्टिफाई करूछ से मूवी हाँ सेटा हाँ हाँ तुम तो सही कथा कहले ना हाँ से पचार ए मूवी देखिछ हैव यू सीन दिस मूवी ओके को मूवी को डायरेक्टर भल लागंती हैव यू सीन ऋतुपर्ण घोष ऋतुपर्ण सर कौन मूवी देखिछ को नाउ आई एम आस्किंग डू यू नो ऋतुपर्ण घोष हाँ को मूवी ता देखिछ हैव यू सीन चक्रवाली ओके ठीक अछि हु वाज द हीरो प्रसेनजीत डोंट नो प्रसेनजीत वाज द हीरो इन चक्रवाली राइट सो ताउट पर्टिकुलर टी कहला तुम हाँ तुम कहल ना से जिनसा सर मत आई अंडरस्टैंड द स्टोरीज डिफरेंट सोसाइटीज डिफरेंट कल्चर्स डिफरेंट ट्रेडिशंस हाउ आई एम सपोज टू लर्न अबाउट बेंगली हाउ आई एम सपोज टू लर्न अबाउट यूपी मिर्जापुर देखले यूपी रिलेटेड गोटे आइडिया आसला ये सब नो बिहार देखली कि गैंग सब आसेपुर देखली बिहार के क्राइम आइडिया टी पड़े आसला सब डिफरेंट सोसाइटी हम सेमती देख पारिबा बुझी पारिबा ना 2 स्टेट्स देखिली हाँ केमती साउथ इंडियन मैरिज हुए केमती जानली सो मूवी इज ए गुड थिंग बट तुम तार पॉजिटिव एक्सप्लोर करथा दरकार आ भल भल मूवी साइंटिफिक मूवी कौन देखिछ हाँ कहब सब से पचार सब रेडी थी दरकार तुम देखिन भल भल मूवी देखी दो ओके ठीक है प्रिपेयर करके आस नेक्स्ट टाइम आम इंटरेक्ट करवा जब भी जहाँ भी से पुणी डाउट्स आसो तुम आंसर बनला पर आउ डाउट्स आसो आ भी किसी पॉइंट्स आम आसले कहि गोटे पॉइंट रहा रिगार्डिंग आउ किसी भी कहि आज आज मेजोरिटी कहि आ किसी अच्छी ओके थैंक यू।